हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ फिजियो फील्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी इंजरीज के बारे में और मेनली इस वीडियो में हम न्यूमोथोरैक्स और टेंशन न्यूमोथोरैक्स देखेंगे। तो द टाइप ऑफ पल्मोनरी इंजरीज आर ड्यू टू द contusion. There will be the pneumothorax or hemothorax. The laceration will be there, or the chest wall injuries will lead to the pulmonary injuries. So number one, contusion of the lung. Contusion of the lung is caused by deceleration injuries or crush injuries or trauma produced extensive parenchymal damage. Hemorrhage and interstitial edema will lead to the obliteration of alveolar space and consolidation of large area of pulmonary tissues. This will cause the contusion. The contusion can be classified as it can be the unilateral or bilateral, or the contusion can cause the damage of small area and there will be the widespread damage. So the small damage is due to the edema and extravasation of blood. The main diagnosis of these injury is by testing the hemoptysis and tracheobronchial secretions. The treatment is fluid restriction, chest physiotherapy, pulmonary care, steroid and ventilations if it is necessary in the severe cases. So this is the brief about contusion of lung. Now the complication of the contusion of lung is it will cause pneumonia, cause atelectasis, it will cause respiratory failure or acute respiratory distress syndrome. So these all are the complications of the contusion of lung. Now the important topic of this video is pneumothorax. So here pneumothorax is a common cause of respiratory insufficiency due to the chest trauma. Any chest trauma will lead to the respiratory insufficiency and this cause the pneumothorax. What do you mean by pneumo? Can anyone answer? If you have answered in 5 seconds, then please put a comment in the comment box. So pneumo means air and thorax means the thorax cavity. So the accumulation of air in the thorax cavity is called pneumothorax. So this is pneumo, which means air, and thorax means thoracic cavity. Okay, so it is a most common respiratory insufficiency. If तो अब एयर एक्यूमुलेशन कैसे होगा? अगर रिब फ्रैक्चर हो या फिर सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा हो तो उसकी वजह से न्यूमोथोरैक्स हो सकता है. तो न्यूमोथोरैक्स कैन बी क्लोज्ड, कैन बी ओपन और टेंशन. सो क्लोज न्यूमोथोरैक्स इज अ सिंपल टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स. तो स्मॉल और सिंपल न्यूमोथोरैक्स जो होते हैं उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और वो आसानी से डायग्नोस भी नहीं होते. ओके, जल्दी से डायग्नोस नहीं होते इट मीन्स. और रिपीटेड, नेक्स्ट पॉइंट है रिपीटेड चेस्ट एक्सरे अगर हम करवाएं आफ्टर 12 to 24 hours is essential to confirm that it is not progressive. Okay, we have to do the chest x-ray in 12 to 24 hours that it will confirm that the pneumothorax is not progressive. The bilateral pneumothorax is an emergency, so the patient should be hospitalized soon, and the late pneumothorax can also be occur. Open chest wound. ओपन चेस्ट वुंड क्या कर सकते हैं? ओपन चेस्ट वुंड कैन कॉज द कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लंग, और वो क्या कर सकते हैं? पैराडॉक्सिकल शिफ्ट ऑफ मीडियास्टिनम विद ईच रेस्पिरेशन. विद ईच रेस्पिरेशन मीडियास्टिनम का पैराडॉक्सिकल शिफ्ट होगा जिसकी वजह से हाइपोवेंटिलेशन और कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा. सो ये जो शिफ्ट है मीडियास्टिनम का उसको क्या कहते हैं? मीडियास्टिनल फ्लडर. ओके, तो ये जो सिंपल न्यूमोथोरैक्स है उसका ट्रीटमेंट मेनली क्लोजर ऑफ वुंड बाय द इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज और बाय द सर्जरी. सो ये मेन ट्रीटमेंट है न्यूमोथोरैक्स का. अब हम डिस्कस करते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स.
So the tension pneumothorax is an emergency. तो हम एक उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में डिस्कस करते हैं. नंबर 1, अगर लंग में इंजरी हुई तो इट विल लीड टू द वेल्वुलर एयर लीक. दिस विल कॉज lung collapse on the same side due to the accumulation of air. This accumulation of air will lead to the mediastinal shift to the opposite side, and this will cause the increase in intrapleural pressure. This will lead to the decreased in venous return, then lead to the decrease in ventilation, and the patient will be hypoxia, in the condition of hypoxia, and there will be the cardiac arrest. So this is the cause of tension pneumothorax. Okay, now the diagnosis should be immediate. Okay, जो भी डॉक्टर है वो जल्दी से इमीडिएटली डायग्नोस करेगा और उसको चेस्ट एक्सरे के लिए वेट नहीं करना पेशेंट को. अर्जेंट ट्रीटमेंट होना चाहिए. तो अर्जेंट ट्रीटमेंट में निडल thoracocentesis in the second intercostal space in mid clavicular line में सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में निडल थोरेकोसेंटेसिस करेंगे ताकि टेंशन जो है वो रिलीज हो सके. दिस इज द अर्जेंट ट्रीटमेंट. ओके, सो जो ये अर्जेंट ट्रीटमेंट है थोरेकोसेंटेसिस का, वो क्या करता है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स को सिंपल न्यूमोथोरेक्स में कन्वर्ट कर देता है. तो उससे जो इमरजेंसी है वो कम हो जाती है ना, सीवियरिटी डिक्रीज हो जाती है. और अदर ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट. अदर ट्रीटमेंट क्या है, मैनुअल चेस्ट फिजियोथेरेपी, मैकेनिकल insufflation and exsufflation, intrapulmonary percussive ventilation, mechanical assisted cuff, intermittent positive pressure breathing, and surgery. These are the other treatment of the pneumothorax, and the main important treatment are thoracocentesis and intercostal tube drainage. So these are the alternative treatment, and they are both are the main treatment. Though, so this is all about the pneumothorax. If you find some informative in my videos, then please subscribe my channel, share it, and like my videos, and put comment in the comment box if you have any doubt. Bye.